नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे कि लैब में मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड से डीओ का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। मॉडिफाइड विंकलर्स मेथड को हम अजाइड मेथड या आयोडोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं और डीओ एस्टिमेशन का ये सबसे परफेक्ट मेथड माना जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कस the estimation of DO using modified Winkler's method in the lab, and it is also called iodometric method or azide method. And till date, it is the most reliable method of DO estimation. So let's start. तो पहले हम कुछ ग्लासवेयर्स या एपरेटस डिस्कस करेंगे। जैसे ये दिस इज अ ब्योरेट्स और इसमें सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन भरा जाता है और फिर इसको यूज करके धीरे धीरे बूंद बूंद सोल्यूशन टपकता है और वो इस कॉनिकल फ्लास्क में जो हम सैंपल रखा होता है हमने उससे हम टाइट्रेट करते हैं। सो इसमें जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में टाइट्रेंट भरा जाता है। सो दिस इज अ ब्यूरेट एंड द टाइट्रेंट इज filled in this burette, and in our case for DO estimation the titrant is sodium thiosulfate and the strength of the solution is 0.025 N. So, and this is a conical flask. We take the sample in the conical flask and we titrate it from the titrant, and drop by drop the titrant falls in the solution which is kept in the conical flask, and we keep shaking the conical flask and we titrate it. यहाँ मेरे पास कोई lab नहीं, sorry, I don't have a lab, so I cannot actually demonstrate, but I'm trying to do it in the best possible way with the resources that I have. This is a conical flask. We usually have the sample in it. This is the burette. We have the titrant in it, and this is the BOD bottle. I have explained this earlier in my previous lecture about sampling of DO. So this is a BOD bottle, and this volume of the BOD bottle is usually 300 ml, but there are also smaller BOD bottles. But we usually use a 300 ml BOD bottles for a DO estimation, and for sampling of water when it comes to DO estimation. Let's see. So this is a pipette. We use pipette to suck small amounts of reagents, and when we were in our bachelors, we used the same method of sucking reagents via pipettes, but now it's considered an unsafe practice, so you shouldn't be doing it. You should be using a pipette bulb, and just like a dropper, you squeeze the bulb and the chemical is sucked in. तो ये नहीं करना चाहिए, हमने भी ये किया है, बट ये मुंह से सक करने वाला प्रोसेस अब नहीं करना चाहिए, अनसेफ होता है। और अगर पाइपेट यूज ही करना है तो एक पाइपेट बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, बल्ब को दबा के और उसमें पाइपेट में केमिकल भर जाता है और फिर बल्ब को धीरे धीरे स्क्वीज करके केमिकल को हम रिलीज भी कर सकते हैं, जैसे ड्रॉपर में होता है। सो डोंट डू दिस एनीमोर। दिस इज अ ग्लास रॉड। तो ये पाइपेट है और ये ग्लास रॉड है। सो व्हेन वी pour strong chemicals like concentrated hydrochloric acid and concentrated sulfuric acid, in this case we'll be using sulfuric acid. So we don't just pour sulfuric acid right from the bottle into the sample. No, that's a very dangerous way because sulfuric acid might just bump back. Okay, so what we do, we use a glass rod to add sulfuric acid to something which is kept in a beaker or a conical flask. So that's it. That this is a glass rod. We use it to pour acids, and we also use a glass rod to stir solutions. Preparation of chemicals. Pehla chemical, manganese sulfate solution. What we do, we dissolve 480 gram of MnSO4.4 H2O or 400 gram of MnSO4.2 H2O or 364 gram of MnSO4 H2O in distilled water and dilute it to 1 liter, that is 1000 ml up to mark. So ये up to mark जो है ये बहुत important है। कोई भी हमारे पास बीकर होता है, मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें 1000 ml का जो मार्क होता है, तो हम बिल्कुल मिला लेंगे कि हमारा जो स्टॉक सोल्यूशन बन रहा है वो 1 लीटर है और वो सारे केमिकल्स डालने के और स्टर करने के बाद उसका जो वॉल्यूम होता है वो मेजरिंग सिलेंडर में 1000 ml अप टू मार्क होना चाहिए। 1000 ml का मार्क टच होना चाहिए, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो अप टू मार्क इसलिए कि सारे केमिकल्स डालने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट है वो मेजरिंग सिलेंडर में 1000 ml एक्यूरेट होना चाहिए। अप टू मार्क मींस 1000 ml एक्यूरेट, ना एक कम ना एक ज्यादा।
तो वो परफेक्ट सोल्यूशन है। तो मैग्नेट सल्फेट अलग अलग फॉर्म्स में होता है, कभी कभी मैग्नेट सल्फेट पॉइंट ये 4H2O होता है, कभी कभी मैग्नेट सल्फेट 0.2H2O होता है, और कभी कभी मैग्नेट सल्फेट 0.1H2O होता है। तो जैसा आपके पास केमिकल हो उस हिसाब से ये क्वांटिटी दी गई है। आप 480 ग्राम या 400 ग्राम या 364 ग्राम लीजिए, जो केमिकल आपके पास लैब में प्रेजेंट है, उसमें जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन है उस हिसाब से। दूसरा तैयार करते हैं सोल्यूशन, अल्कली आयोडाइड अजाइड सोल्यूशन। दिस इज आल्सो an important solution for DO. Without this, you cannot estimate DO. So this is the azide solution, which is part of the modified Winkler's method. So what happens? Dissolve 500 grams of sodium hydroxide or 700 grams of potassium hydroxide. So this sodium hydroxide and potassium hydroxide, the quantity of this chemical varies depending upon the quantity of depending upon their molecular weight. So of course, sodium hydroxide has a different molecular weight. Potassium hydroxide has a different molecular weight. So it depends on their molecular weight. So if you are using sodium hydroxide, dissolve 500 grams of sodium hydroxide. If you are using potassium hydroxide, dissolve 700 grams of potassium hydroxide in a small amount of distilled water, like half a liter of distilled water. And to that, add 135 grams of sodium iodide or 150 grams of potassium iodide. Again, the amount of sodium iodide is different than the amount of potassium iodide. And this difference is because these two chemicals have different molecular weights. तो सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड में से कुछ भी लिया जा सकता है, और अगर सोडियम आयोडाइड ले रहे हैं तो 135 ग्राम लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं तो 150 ग्राम लीजिए। और ये जो क्वांटिटी है ये डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों ही केमिकल्स का मोलिकुलर वेट डिफरेंट है, और मोलिकुलर वेट से ही तय होता है कि हम कितना केमिकल डालेंगे इसमें। एंड अगेन ये सारा कुछ आप 500 मिलीलीटर या 600 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कीजिए, और फिर उसको मेजरिंग सिलेंडर में 1 लीटर अप टू मार्क या कि 1000 ml अप टू मार्क कीजिए। अप टू मार्क का वही मतलब होता है कि सारे केमिकल्स और ऐड करने के बाद जो रिएजेंट का फाइनल वॉल्यूम है वो 1000 ml होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ऐसा नहीं हो कि आपने पहले 1000 ml डिस्टिल वाटर ले लिया और उसमें सारे केमिकल्स ऐड किए तो फिर उसका वॉल्यूम 1000 ml से बढ़ जाएगा, तो फिर उसकी परफेक्ट नॉर्मेलिटी परफेक्ट स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा ही जो वॉल्यूम है वो 1000 ml अप टू मार्क होना चाहिए। सारे केमिकल्स ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग ऑल द केमिकल्स into that solution, the final volume of the solution should come to 1000 ml up to mark, not more, not less. That is the beauty of this science. And so ये एक solution आपने बना लिया। अब दूसरा क्या करते हैं कि 10 ग्राम ऑफ दूसरे बीकर में या दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में 10 ग्राम ऑफ सोडियम अजाइड डालना चाहिए, NaN3, और उसको डालना चाहिए 40 ml डिस्टिल वाटर में। सो 10 ग्राम सोडियम अजाइड NaN3 प्लस 40 ml डिस्टिल वाटर, ये आप कीजिए एक अलग सोल्यूशन में, और फिर इसको उस प्रीवियस सोल्यूशन जो 1000 ml अप टू मार्क आपने बनाया था अजाइड अल्कलाइन आयोडाइड सोल्यूशन, उसमें डाल दीजिए। तो अल्कलाइन आयोडाइड सोल्यूशन 1000 ml अलग बना, और सोडियम अजाइड सोल्यूशन वो 40 ml डिस्टिल वाटर में वो अलग बना, और फिर इन दोनों को मिला दीजिए। जो भी वॉल्यूम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है अब, लेकिन पहला जो वॉल्यूम था दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस का वो सही होना चाहिए। और तीसरा केमिकल है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 36N होता है, वो लैब में हमेशा प्रेजेंट होता है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज 36N, ऑलवेज प्रेजेंट इन द लैब, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। उसका SG स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.84। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेशनशिप, इज द वेट ऑफ एनी केमिकल विथ इन कंपैरिजन टू वाटर। तो पानी के अनुपात में कोई केमिकल कितना भारी है वही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ concentrated H2SO4 is 1.84. That means it is 1.84 times more heavy than water, which means if you pour H2SO4 in water, it will settle down at the bottom because it is heavier than water. That's what specific gravity means. Starch indicator. So how to make starch indicator? Add 2 gram of laboratory grade starch and 0.2 gram of salicylic acid to 100 ml of hot distilled water. और इसको भी अप टू मार्क करेंगे कि एक बीकर में या एक मेजरिंग सिलेंडर में आप हॉट डिस्टिल्ड वाटर लीजिए, और उसको आप 100 ml अभी मत करिए, 95 ml रखिए, और उसमें 2 ग्राम लेबोरेटरी ग्रेड सॉल्युबल स्टार्च डालिए और 0.2 ग्राम सैलिसिलिक एसिड डालिए।
ये डालने के बाद उसको अच्छे से स्टर करिए और फिर उसका जो वॉल्यूम है उसको 100 ml 100 ml अप टू मार्क यहाँ पे कीजिए। स्टार्च सोल्यूशन सिर्फ 100 ml ही बनता है क्योंकि उसको सिर्फ 1 ml ही डालना होता है, ज्यादा डालना नहीं होता। So we add 2 gram of laboratory grade starch and 0.2 gram of salicylic acid in about 90-95 ml of hot distilled water. We stir it well and then we make the volume up to 100 ml of distilled water. So up to mark again, but this is 100 ml and not 1000 ml. Two things I would like to clarify here: beaker and measuring cylinder. Beakers also good quality beakers. They come with a mark, and there is a mark of like 100 ml or 500 ml beaker or 1000 ml beaker. So you can use those beakers to make solutions only when you know that the marking on the beaker, that is the beaker is marked 100 ml. This is accurate. So you have to standardize that beaker. How? Take 100 ml of distilled water in a measuring cylinder and pour that into the beaker. And if that 100 ml of distilled water after going into the beaker is up to mark to the 100 ml of marking on the beaker, that means your beaker is accurate and you can use it for the preparation of chemicals. If not, you always use a measuring cylinder for the preparation of chemicals because chemicals preparation में accuracy is very important. तो क्या होता है, बीकर में भी 100-200 के मार्क्स बने होते हैं, पर कभी कभी वो मार्क इनएक्यूरेट होता है। मतलब कि जब बीकर में 100 का मार्क बना है तो 100 नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, एक्यूरेट नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि बीकर एक्यूरेट है कि नहीं? क्या करेंगे, मैं एक किसी मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml डिस्टिल वाटर ले लेंगे और उस डिस्टिल वाटर को हम उस बीकर में डाल देंगे और फिर हम देखेंगे कि वो 100 ml जो डिस्टिल वाटर है बीकर में, वो डिस्टिल वाटर का जो मार्क बना है 100 का बीकर में, वो उससे टैली करता है कि नहीं। अगर पता चला कि मार्क यहाँ है और डिस्टिल वाटर ऊपर है या नीचे है, इसका मतलब आपका वो बीकर का जो मेजरिंग है, जो कैलिब्रेशन है, वो सही नहीं है। तो फिर आप उस बीकर को केमिकल के प्रिपरेशन के लिए यूज मत करिए। उसी बीकर को केमिकल के प्रिपरेशन के लिए यूज करिए जहाँ की उसका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है और बीकर का कैलिब्रेशन एक्यूरेट है। नहीं तो फिर मेजरिंग सिलेंडर को केमिकल्स के प्रिपरेशन में यूज करिए और जहां भी अप टू द मार्क होता सारे फिर रिएजेंट्स आप मेजरिंग सिलेंडर में ही डालेंगे और अप टू द मार्क 1000 ml या 100 ml जो भी है वो बनाएंगे। तो मैं प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर आपके पास बीकर एक्यूरेट है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो बीकर का इस्तेमाल करिए। नहीं है तो मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करिए रिएजेंट्स बनाने के लिए और सारे वॉल्यूम्स को मेकअप करने के लिए, क्योंकि हमने भी अपनी लैब में मेजरिंग सिलेंडर में ही वॉल्यूम्स को मेकअप किया है। ये और लगता है सुनने में, पर एक्यूरेसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास बीकर एक्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क एक्यूरेट है, इवन दैट वर्क्स, वो भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो हमारा टाइट्रेंट है, सोडियम थायोसल्फेट, ये बनना चाहिए 0.025 N। और इसका रीजन है बिकॉज सोडियम थायोसल्फेट has a fixed weight, a molecular weight, and oxygen O2 also has a molecular weight. So titration में जब भी whenever we take a chemical, the molecular weight of two chemicals there is a certain relationship which I cannot explain it today, which is not beyond the scope of this video, but I'll explain it to you in a later video. But there's a reason why we take 0.025 N of sodium thiosulfate for titration and nothing else. Okay. So how do we make this chemical reagent? Dissolve 6.205 gram of sodium thiosulfate pentahydrate in distilled water. Add 1.5 ml of 6N-NaOH or 0.5 gram of solid NaOH to this solution and dilute to 1 liter or 1000 ml up to mark. So 6.205 gram sodium thiosulfate pentahydrate लीजिए और उसमें उसको पानी में डिसॉल्व कीजिए और उसमें या तो आप 1.5 ml 6N-NaOH लें या फिर 0.5 ग्राम सॉलिड NaOH डालें उस सॉल्यूशन में और उसको फिर 1000 ml अप टू मार्क जैसा मैंने बताया वैसे कर लीजिए। और इसको आप चाहें तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं पोटेशियम बायोआयोडेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ बिफोर यूजिंग, बट देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन नीडेड इफ यू यूज दिस सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो डीओ में क्या होता है, हर सॉल्यूशन को कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव की या स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डीओ का जो टेस्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, इसकी रीडिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो भी केमिकल्स हम बनाते हैं उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, उसको हम
स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं किसी दूसरे केमिकल्स के अगेंस्ट, ताकि देखने के लिए कि इसका स्ट्रेंथ तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि डीओ के केमिकल्स जो है वो टाइम सेंसिटिव हैं, उनका स्ट्रेंथ बहुत जल्दी कम हो जाता है, इसलिए उनको स्टैंडर्डाइज करते हैं दूसरे केमिकल्स के अपेक्षा में, जैसे कि के अगेंस्ट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम बाइआयोडेट, क्योंकि इन केमिकल्स का स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होता है जल्दी से विद टाइम, तो ये स्ट्रांग रहते हैं, तो इनके अगेंस्ट हम सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि देखने के लिए कि हमारा जो सोडियम थायोसल्फेट है वो 0.025 N ही है या कुछ और है, पर हमको ये स्टैंडर्डाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है अगर हम केमिकल्स को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ये एक बेसिक रूल है डीओ एस्टिमेशन में कि जितने भी केमिकल्स डीओ एस्टिमेशन के लिए जरूरी हैं उन सबको आप फ्रेश प्रिपेयर करें, उसी दिन प्रिपेयर करें, और विद इन 5 days आप उन सारे केमिकल्स को यूज कर लें, ताकि आपको किसी प्रिजर्वेटिव की या किसी स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत ना पड़े, उसका स्ट्रेंथ बरकरार रहे। So that's what we did in our lab during graduation and post graduation. We always prepared chemicals fresh and they had perfect strength. We didn't need to standardize them or to use a preservative, because preservative is chloroform, and as students we never got to handle chloroform because it's toxic and it's dangerous, we all know it. So to avoid using preservatives and standardization, and to have the DO estimated in the minimum amount of chemicals that we students have access to in a lab, we always use freshly prepared reagents. That's the basic point. So use freshly prepared reagents to avoid adding preservatives and using standardization against other chemicals to know if the strength of the chemical has deteriorated or it's still okay. So make freshly prepared reagents and use them within the first 5 days of your preparation. So दूसरा तरीका है dissolve 2.82 gram of sodium thiosulfate pentahydrate in 1 liter distilled water and add 5 ml of ammonium carbonate and chloroform to this as a preservative. We don't need to do this because we are making freshly. अब क्या होता है, प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे करते हैं प्रोसीजर? सैंपल वाटर इन अ बीओडी बॉटल. सो रिगार्डिंग बीओडी बॉटल and how to sample water for DO, I have already explained it in my lecture 12, sampling for DO estimation using Winkler's method. So please go and watch this lecture, how to sample DO, how to sample DO in a BOD, sample water for DO in a BOD bottle perfectly, because sampling is a very important step in DO estimation, as important as titration. So next, add 2 ml of manganese sulfate solution to the sample. So you sample BOD bottle perfectly, you close the lid, and you take 2 ml of manganese sulfate using a pipette, and you insert the pipette all the way to the bottom of the bottle, and then you release your pipette, and then you release 2 ml of manganese sulfate solution to the sample. To add solution, immerse the measuring pipette tip to the bottom of the BOD bottle. Any chemical you add to the BOD bottle, you immerse the tip to the bottom. Next, add 2 ml of alkaline iodide azide reagent in the same way. Take it in a pipette and insert the pipette all the way to the bottom of the BOD bottle. Release your pipette and add 2 ml of alkaline iodide azide reagent. Place the bottle stopper and shake the contents of the bottle gently. Now you close the lid of the BOD bottle tightly, and you invert it upside down to mix all the reagents that you have added to the sample, like this, and very slowly, like this, upside down, inverting, okay, very slowly. And you will see that a precipitate forms, like it's a dirty precipitate forms. Allow the precipitate to settle down and add 1 ml of concentrated H2SO4. So after you shake the bottle a few times, a dirty precipitate will form. Once the precipitate forms, allow the precipitate to settle down at the bottom of the BOD bottle. And now again remove the lid and immediately add 1 ml of concentrated sulfuric acid using a pipette. And this time, when you add 1 ml of concentrated sulfuric acid, again in the same way, but instead of touching the bottom of the BOD bottle, keep it a little up, like keep it like 1 centimeter above the bottom of the BOD bottle, and insert the pipette and release your concentrated H2SO4, and then close the lid again. After you add the concentrated H2SO4, a deep brown precipitate will form. Again, gently invert the bottle a few times and allow the precipitate to dissolve completely. Now your DO is all fixed in your bottle. It's not going to go anywhere, so that's fine. You are safe now, and you can use it for titration. Use this bottle filled with the sample and reagents, and you can titrate it within the next 8 hours because your DO is fixed now. Now,
How do we titrate it? We use a clean burette which has been thoroughly washed with distilled water and dried, and it is on a burette stand, and we pour sodium thiosulfate 0.025 N into the burette up to the mark. Now we take 100. We can do now. We have to titrate. So we take 100 ml of sample from the BOD bottle in a beaker, in a conical flask, and slowly, drop by drop, we start adding sodium thiosulfate into this, and we keep shaking the conical flask gently while titrating. So drop by drop sodium thiosulfate from the burette, and the sample is in the conical flask, and we keep shaking the sample. You will see that a pale yellow color appears after a while. When this pale yellow color appears, stop titrating. At this point, add 1 ml of starch solution in the conical flask. Again, use a pipette, add 1 ml of starch solution in the conical flask, shake the conical flask. The conical flask solution will turn blue. And the blue color will be either this color or either this color. So it depends on the sample. Solution turns blue. Now, keep adding, now again start titrating. Keep adding sodium thiosulfate slowly to the conical flask with continuous gentle shaking of the conical flask. And this blue color will disappear at a point. At the point where this blue color of the sample in the conical flask disappears, stop titrating at that point. That is your end point. So now record the amount of sodium thiosulfate which has been used from the burette. तो burette में जितना sodium thiosulfate था, आप देख लीजिए कितना यूज हुआ है. That is your dissolved oxygen. क्या करते हैं, burette एकदम साफ सुथरा distilled water से धुला हुआ, सुखाया हुआ, उसको हम स्टैंड पे लगाते हैं, उसमें सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं, और कॉनिकल फ्लास्क में हम एक 100 ml सैंपल ले लेते हैं, और उसमें फिर burette से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम सोडियम थायोसल्फेट सैंपल में गिराते हैं और कॉनिकल फ्लास्क को जेंटली हिलाते रहते हैं, हल्के हल्के हिलाते रहते हैं. थोड़ी देर में हम देखेंगे कि पेल येलो कलर फॉर्म हो जाता है कॉनिकल फ्लास्क में. जब ये पेल येलो कलर आए, टाइट्रेशन को रोक दीजिए. उसके बाद उसमें 1 ml स्टार्च सोल्यूशन डालिए पिपेट से और हल्का सा हिलाइए, फिर से टाइट्रेशन शुरू कीजिए. जो कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन है वो स्टार्च डाल के हिलाते ही ब्लू कलर का हो जाता है. उसके बाद उसको सोडियम थायोसल्फेट ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते रहिए और कॉनिकल फ्लास्क को हिलाते रहिए, और फिर एक पॉइंट आएगा जहां की वो ब्लू कलर खत्म हो जाता है. जिस पॉइंट पर वो ब्लू कलर खत्म हो जाता है वही आपका एंड पॉइंट है. उसको रिकॉर्ड करिए और देखिए कि burette में कितना सोडियम थायोसल्फेट खर्च हुआ है. जितना सोडियम थायोसल्फेट burette में खर्च हुआ है वही आपका वो है DO का वैल्यू है. अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और DO इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट यूज्ड इन द टाइट्रेशन. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन क्लीन वाटर के डिस्टिल्ड वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है 14.6. मैक्सिमम DO जो डिस्टिल्ड वाटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो सकता है वो है 14.6 मिलीग्राम पर लीटर या 14.6 ppm. The maximum amount of dissolved oxygen that distilled water can hold at 0 degrees Celsius is 14.6 milligram per liter at 1 atmospheric pressure. When the temperature is 5 degrees Celsius, this solubility decreases and it becomes 12.8 milligram per liter or 12.8 parts per million of oxygen in water. Again, when the temperature is 10 degrees Celsius, solubility decreases further and it becomes 11.3 milligram per liter or 11.3 parts per million. When the temperature is 15 degrees, the solubility decreases further and it's 10.2 milligram per liter of oxygen in water. At 20 degrees Celsius, this oxygen solubility goes further down and it becomes 9.2 milligram per liter. At 25 degrees Celsius, it's even lower and the solubility of oxygen is now 8.6 milligram per liter. At 100 degrees Celsius, जब बॉइलिंग वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तो बॉइल हो जाता है, वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस 0 पार्ट्स पर मिलियन. बॉइलिंग वाटर में ऑक्सीजन गैस है और इसमें कोई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होता है. तो होपफुली मैंने जो आपको आज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा. कोई डाउट हो, कोई शंका हो, मुझे जरूर बताइए. और विद दिस, जय हिंद, जय भारत. Please do subscribe to my channel, like and share and comment if you want to comment. Thank you.